comment on Indians. Surprising that they are doing this to a country that sent them the maximum number of tourists. No, certainly so. I mean, it's absolutely deplorable, the comments which are coming out from sections of Maldives. Also, let's remember, it's not everyone in Maldives is criticizing India. There is one section which is anti-India, which seems to be, and which is passing such remarks. It's absolutely deplorable and absolutely, of course, see, India not only helps the economy of Maldives through our tourism, right? We also provide them security. If you remember, way back in 1988, there was a coup in Maldives where India sent its forces, and within hours the coup was stopped. So for the national security of Maldives, India is the neighbor right across. As well as there have been times when there was an acute water shortage in Maldives. You know, even being an island, drinking water is a problem. So there was an acute shortage, and India sent, our aircrafts and our navy with bottled water. So for leadership people in Maldives to pass such comments on India is, I think, absolutely uncalled for. Okay, Bollywood good to our neighbor, but why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and always praise it, but dignity first. Certainly, yes, dignity and national dignity first. And towards that, what Akshay Kumar is saying, I think the next holiday Akshay Kumar should take should be in Lakshadweep. Right? See, the destinations get prominence, come to be known, and more tourists follow if the destination is branded and marketed well and there's a good infrastructure. So as more and more influencers from India, leading names, start visiting Lakshadweep, the tourism sector and tourism economy of Lakshadweep, and this has nothing to do with Maldives. We should be promoting our own, destination and our own tourism economy. India has so much of a diversity all across the nation, right? From mountains and rivers to snows and deserts and beaches. So if more of our celebrities, influencers like Akshay Kumar start visiting such locations, that will definitely boost our own economy. And I would say that let us not even think about Maldives, that you're promoting Lakshadweep for Lakshadweep. It's not a zero-sum game. Okay. Also, the former president of Maldives government official Mariam towards the leader of a key ally that is instrumental for Maldives and security and prosperity, Dr. Mohammed Muzi, government must distance itself from these comments and give clear assurance to India they do not reflect a government policy. See, what the previous Prime Minister Nasheed is saying is absolutely right. What has happened is that, the new regime which has come to power is strongly pro-China and also anti-India. Now, with episodes like this, what is happening is that politicians of the ruling party are taking pot shots at India and criticizing India. What Nasheed says is absolutely right. And remember, Nasheed was pro-India. He looked at India first. Right, that leaders of the ruling party right now should be responsible, and this is not the way to run a country when you have such a big partner economy which is right next to you. Okay, on this matter, to the recent remark by the Maldives Deputy Minister of Youth Empowerment Mariam, the Indian High Commissioner has taken up the matter in mail. Yes, certainly. So, see, India will be taking up these comments by the government of Maldives, if it's individuals, through our Ministry of External Affairs and via our, mission in Malé. That is something which India will absolutely do. However, at the same time, many of the comments are coming from people who are not in the government in Malé, but who are anti-India, right? So that has to come down. So this whole environment where leaders of Maldives are promoting anti-India views and trolling in a way, right, India, is something which the Maldives government has to relook and undo immediately. Okay. Also, this all controversial statement, the government of Maldives is aware of a derogatory remark on social media platforms against foreign leaders and high-ranking individuals. These opinions are personal and do not represent the view of the government of Maldives. Moreover, the relevant authorities of the government will not hesitate to take action against those who make such derogatory remarks. No, certainly.
this is a welcome step, as we were saying, by the government of Maldives, wherein it has put out a public statement saying that no government officials, should make such derogatory remarks. And what is important to note, in this statement of theirs, they've also said that action could be taken against those who indulge in such derogatory talks. So that is a welcome step, but the point is that the proof of the pie lies in the eating. So let us see in the coming days and weeks, how do members of the government of Maldives react or act, or their views about India. So India will be very much on the watch out for that. Okay, and recently, after this all controversy has started, so why, how you see this, and why this kind of controversy has grown? See, this controversy has grown up essentially because of one, I would say, timing. Right now, the new government in Maldives, which took power just a few weeks ago, has come to power, and this government is, yes, anti-India. Right? They've asked India to take back our soldiers or our technicians who were there to help in with the naval rescue missions and air ambulance, right? And there was that India get out, right? So this government has just come to power, and at the same time, Prime Minister Lakshadweep Prime Minister Modi is in Lakshadweep. So that kind of, juxtaposes two things. And also, I think Prime Minister Modi tweeted images of, the beach and tourism and snorkeling, saying that, which he would do if he goes to, any place in India. He participates there, he visits the cultural spots, and he promotes the local economy, local tourism. So by doing this, Prime Minister Modi was promoting local economy with respect to India. It had nothing to do with Maldives. But apparently Maldives, felt ticked off, and therefore they thought that Modi is promoting Lakshadweep as a tourism destination versus Maldives to hurt Maldives' economy. That's the twist that the anti-India groups in Maldives are playing out. Okay, one more question. Praise Indian on voting day highlights New Delhi's role in liberation war. Certainly, see, Sheikh Hasina has been a good, strong, strategic friend of India, and she has taken steps against radical Islam. That's been important from India's perspective, which prevents terrorism coming into us. At the same time, when she's going into the elections right now, the political environment in Bangladesh is very, very tense. The opposition is boycotting the elections, whereas Hasina says that she is leading the country towards economic development and stability. In this process, she thinks and she wants India as a partner. So obviously she is praising India with respect to also the independence of Bangladesh, reminding the people, reminding the voters of Bangladesh that India is a friend. India has, participated in our freedom struggle with us, helped us gain freedom. So when I stand with India, that is the right policy for Bangladesh to take, and not what the opposition, which wants lesser ties with India and which promotes radicalism, they are not the right leaders to lead the country. उसके बाद एक अलग ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है मालदीव्स को लेकर, लक्षद्वीप को लेकर। कुछ स्टेटमेंट भी वहां से आई हैं, कुछ वहां के प्रोमिनेंट लीडर्स जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो काफी हद तक ये है टाइमिंग के हिसाब से। अभी मालदीव्स में क्या है, नई सरकार आई है, और ये जो नई सरकार आई है, ये एक एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ आई है कि हम इंडिया से अपने रिश्ते बैलेंस करेंगे, और इंडिया की वहां पर जो कुछ आर्मी के टेक्नीशियंस हैं, हमने कुछ बोट्स दी हुई हैं, प्लेन्स दी हुई हैं एयर एम्बुलेंस वगैरह के लिए, कि उनको हम वापस भेजेंगे। और ये जो नई सरकार है, क्लियरली बहुत ज्यादा प्रो चाइना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व हो रही है। ऐसे सरकार अभी पावर में आई है, और ऐसे में अभी के समय प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए, और प्राइम मिनिस्टर ने वहां जो टूरिज्म प्रमोशन की जो ट्वीट्स कर दी, उसको देख करके मालदीव्स की सरकार या बहुत लोगों में जो एंटी इंडिया लॉबी है वहां पर, उनको ये लग रहा है कि इंडिया लक्षद्वीप को प्रमोट करके मालदीव्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज्म पे। 1/3 इकोनॉमी, करीब $2 बिलियन सालाना टूरिज्म से आता है मालदीव्स में, राइट? तो उन्हें ये लगा कि भारत जब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहा है, जो कि मालदीव्स के पास में ही है, तो इसके चलते क्या भारत ये संकेत दे रहा है कि वो मालदीव से अपने रिश्तों को एक मस्कुलर बनाना चाहता है और मालदीव्स की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहता है लक्षद्वीप को प्रमोट करके, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है, परंतु इसके चलते कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। जी, अक्षय कुमार बयान, एक ट्वीट
मालदीव की प्रमुख जो हस्तियां इस तरीके के बयानबाजी कर रही हैं उस देश के लिए जो सबसे ज्यादा उन्हें पर्यटक भेजता है अपने पड़ोसियों के प्रति, हम अच्छे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की नफरत भरी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल अक्षय कुमार जो कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं, बट इसको मैं एक कदम आगे ले जाऊंगा ना। जो डेस्टिनेशन है जैसे मालदीव्स हो गया, इतना प्रमोट इसलिए होता गया क्योंकि बड़े सारे हमारे सेलिब्रिटी मूवी स्टार्स वहां जाके फोटोज डालते हैं, तो और भारत के नजदीक भी है मालदीव्स, राइट? तो टूरिज्म बढ़ा, तो अब अक्षय कुमार और बाकी सेलिब्रिटीज को लक्षद्वीप जाना चाहिए ना। अगर वो जाना शुरू करेंगे तब हमारे लक्षद्वीप की इकोनॉमी, टूरिज्म बढ़ेगी। अभी आज की तारीख में कंपैरिजन में आप देखिए, लक्षद्वीप का एनुअल टूरिज्म का रेवेन्यू मात्र $10 मिलियन है, जबकि मालदीव्स का टूरिज्म रेवेन्यू $2 बिलियन है। तो ऑफ कोर्स मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है, तभी वो बढ़ता जा रहा है, ज्यादा लोग जाते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर हमें लक्षद्वीप की डेवलपमेंट होनी चाहिए बिल्कुल, तो इसमें भारतीय लोगों को, हम लोगों को खुद लक्षद्वीप को एज ए डेस्टिनेशन चुनना चाहिए। ओके, इसके साथ ही सरकार के अधिकारी मरियम के प्रमुख सहयोगी नेता ने जो बयान दिया वो एक भयानक भाषा बोली है। उन्होंने ये कहा इससे सरकार को खुद दूर रखना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए, भारत को आश्वासन देना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, नशीद ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। किसी भी देश की कोई रिस्पॉन्सिबल सरकार के मिनिस्टर्स इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देते जैसे कि मालदीव्स की इस सरकार की स्टेटमेंट्स आई हैं। और इन स्टेटमेंट्स के लिए बाय द वे मालदीव्स की सरकार ने खुद ऑफिशियली अब ये कह दिया है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें पर्सनल कैपेसिटी में दी जा रही हैं, कोई मिनिस्टर ऑफिशियल कैपेसिटी पे नहीं दे रहा। तो मालदीव्स की सरकार यस डिप्लोमेटिकली बैलेंस्ड बात कर रही है। उसने देखा कि इस तरह से अगर वो रवैया अपनाएगी तो नुकसान मालदीव्स का खुद होगा। ओके, इंडियन हाई कमिश्नर ने भी आया है माले में। उन्होंने कहा है कि मालदीव के युवा अधिकारी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसको लेकर उन्होंने मामला उठाया है। बिल्कुल, भारत के हाई कमिश्नर ने वहां जो स्टेटमेंट्स दिए बिल्कुल वैलिड हैं, और भारत की सरकार, हमारी मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स को इन स्टेटमेंट्स का संज्ञान लेना चाहिए और ले रही है, क्योंकि मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, अब अलग बात है कि अभी जो नया इनकी कैबिनेट आई है या नई सरकार आई है वो कुछ हद तक प्रो चाइना भी है, पर यह बात थोड़ी है कि ये हमेशा ये एंटी इंडिया। ये भारत और मालदीव्स के इतने रिश्ते हैं, अगेन टूरिज्म के हैं, इकोनॉमी के हैं, फिशरी के हैं। हमने आपदा के समय, कोविड के समय मालदीव्स की मदद करी। हमने माली में, इधर मालदीव्स में पानी का संकट था 2014 में, ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम हो गया था। हमने अपने समुद्री जहाज और एयर कार्गो प्लेन से वाटर पानी भेजा। तो मालदीव्स के हम इतने बगल में हैं कि किसी भी आपदा, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर में भारत उसका फर्स्ट इमीडिएट फ्रेंड है। ऐसे मित्र के साथ मालदीव्स की सरकार के मिनिस्टर्स इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो बिल्कुल निंदनीय है एंड अनवांटेड है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद कह रहे हैं कि जो भी टिप्पणियां हो रही हैं उनसे वो अवगत हैं और वो जल्दी जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। मैं कहूंगा मालदीव सरकार का यह सही कदम है कि उन्होंने क्लियरली ऑफिशियली स्टेट कर दिया है कि जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ये पर्सनल कैपेसिटी में दी जा रही हैं, ये मालदीव गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही, अगर उस पर वो अमल करें, उन्होंने कहा है कि अगर अब आगे कोई और डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेगा भारत के खिलाफ तो उस पर सूटेबल एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में अगर कोई और मिनिस्टर मालदीव्स का भारत के खिलाफ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करता है तो क्या उस मिनिस्टर को मुइजी अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर देंगे। जी, एक बांग्लादेश वोटिंग के दिन उन्होंने भारत की तारीफ की है। देखिए, शेख हसीना का आज जो इलेक्शन हो रही है सबसे बड़ा चैलेंज ये है इनका कि वोटर टर्नआउट कितना हो, क्योंकि बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शन का। अब ऐसे में अगर टर्नआउट कम होगा तो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी और पूरी इस इलेक्शन पे ही क्वेश्चन उठ जाएगा कि भाई मात्र 20% लोगों ने वोट दिया, तुम प्राइम मिनिस्टर हो। ऐसे हालात में आज के दिन शेख हसीना पूरा प्रयास कर रही हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़े, और वोटर टर्नआउट बढ़ाने में उन्हें यह दिखता है कि वो भारत की रेफरेंस दें, इमोशनल कनेक्ट आए लोगों को कि भाई फ्रीडम तो भारत ने दिलाया है। उसके चलते वो अपने वोटर टर्नआउट को बढ़ाने को और अपनी पॉलिसीज जो कि इंडिया प्रति पॉजिटिव हैं, ये दिखाने को कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती है, अच्छी है, बरकरार है और हमें फायदा है। तो ये सारे मिक्स्ड सिग्नल्स भेज करके शेख हसीना अपनी पार्टी की विक्ट्री के
टर्नआउट के चांस बढ़ा रही है। देखिए, ये जो ट्वीट या कमेंट जो मालदीव के मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप के विजिट के बारे में कहा है, इस बेबुनियाद है। इसका कोई मतलब नहीं है। अरे भारत, अब हमारे भारत में हम कहीं भी जाएं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी करें, हम दुनिया का हर एक नागरिक को हक है कहीं भी जाए। और भारत को ऐसा देश तो है नहीं कि वहां पे सिर्फ एक छोटा सा कोई बीच कहीं पर है। 6000 किलोमीटर की जो है हमारी कोस्ट लाइन है और जगह जगह एक से एक खूबसूरत बीचेस हैं। कल को कोई गोवा जाएगा तो वो बोलेंगे साहब गोवा क्यों जा रहे हैं, हमारे टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा। आपको अपने देखना, हर भारत के लिए भारत में एक वही नहीं है। जगह जगह माउंटेन रिजॉर्ट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर बीचेस हैं, हर तरह का मौसम हर समय पे उपलब्ध है। तो हर देश को अपना जो भी गौरव है, जो अपनी चीजें अचीवमेंट्स हैं, उसको बताने का हक है कि नहीं है, ये बात जो है इनको समझना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि भारत और मालदीव के रिश्ते अगर किसी वजह से थोड़े से तनाव में भी हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर हैं क्यों। क्योंकि भारत ने कभी भी मालदीव्स का बुरा नहीं चाहा, अपने किसी भी नेबर का बुरा नहीं चाहा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, सबको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं नॉन रेसिप्रोकल वे में। तो ये तो बेकार का एक बखेड़ा खड़े करने की बात है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी तथ्य है या किसी भी तरह की कोई बात इसको आपको सोचना चाहिए। हमारा देश है, हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, दुनिया को किस तरह से दिखाते हैं कि हमारा भारत देश में ये भी एक जगह है लक्षद्वीप। इतना सुंदर आइलैंड है, 36 आइलैंड्स का जो कॉन्ग्लोमरेट है। अब भले ही अगर वो उस इनके आसपास है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी जो अपनी वो है उसको हम कम करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। Well, let me put it this way. First thing to understand is that there is, I repeat, there is no controversy between Maldives and India on this matter. A deputy minister made a certain tweet, and the Maldives government has stated categorically that it disassociates itself from that tweet. And Government of India, through External Affairs Ministry, has not commented on this, but it is understood that the Indian High Commissioner might take up the matter with the Maldivian government. Now, what we have to understand is that in diplomacy, it is important not to aggravate matters with an endless tit for tat through the media. So, India is doing the right thing by taking up the matter through diplomatic channels. But we also have to see this in the larger, look at the larger picture. The current president of Maldives came into office based on a platform which required the withdrawal of Indian military presence. I should repeat, a very small military presence, 70 and odd, 2 helicopters, a Dornier aircraft and a vessel. Okay, this is not really a military presence. But we should recognize that the president got votes on the basis of that platform. So I am not privy to all that has happened by way of communication between the two governments, but I would reiterate that India has to deal with this diplomatically. If the president of Maldives wants to, and it's understandable that he wants to carry out, what was said in the manifesto, well, we can say that, okay, let us replace the military helicopters with helicopters provided by a private Indian company. You see, let's also understand Maldives' situation. If you are a foreign tourist from Norway, will you go to Maldives if you are not sure of, urgent medical attention if needed? Okay. Now, Maldives cannot replace the Indian helicopters with Chinese helicopters.
They can have Chinese helicopters, but where will they take the patients to? They can't be taken to China. Urgent medical attention. So it has to be India or Sri Lanka, but then Sri Lanka again has limited capacity. So it has to be India. So I think what is required is a proper conversation through diplomatic channels and finding a way out rather than, oh, we'll talk about it and delay matters. Because don't forget, Maldives president went to UAE, Turkey, and now he is on his way to China. Okay. Normally, the first port of call should have been India. So that's why I said what is required is sensitivity and diplomatic subtlety. High Commissioner has taken up the matter in Malay. Government of Maldives issue also the statement. The government of Maldives is aware of a derogatory remark on social media platform against foreign leaders and high-ranking individuals. They said the government will not hesitate to take action against those who make such derogatory remarks. Yeah, my comment is that the government of Maldives has acted responsibly, and we should leave it at that. Okay. And also, sir, the former president of Seed tweet what appealing language by Maldives government official Mariam towards the leader of Key Ali that is instrumental for Maldives security and prosperity. Dr. Mohammed government must distance itself from these comments and give clear assurance to India they do not reflect government policy. Yeah, I'm sure the Maldivian government would have done that. Let us not forget, not to sort of, rub it in. When Rajiv Gandhi was Prime Minister, India had sent military, made a military deployment in Maldives, to foil a coup, which had almost succeeded. So, this happened some time back. But we all should remember these things. But as I said again, I'm only reminding the Indian audience. I'm not rubbing it into Maldivian ears. Okay. Also, the former Shahid says that derogatory remark made by two deputy minister of current Maldives government and member of the political party in the ruling coalition toward Prime Minister Narendra Modi, the people of India, social media is reprehensible and odious. I call on the government of reprimand these official public figure must maintain decorum. This is Maldives internal politics. Okay. We don't have to get involved with that. Okay, one more question from Bangladesh voting day. Well, that is understandable. The voting is on. We shall see what the percentage of voting is. But as observers say, the result is predetermined, which means it is not a real voting. First, let's look at the genesis of this. This all started off because the Indian Twitter commentariat decided to start comparing, the Prime Minister's visit to the Lakshadweep as some kind of a counter to Maldives, which it absolutely was not. The development of tourism in India is completely sui generis. It has nothing to do with the Maldives or in response to the Maldives, because that implies that we've kept the Lakshadweep war as a sort of response to the Maldives. Now, when Twitterati are fighting, Maldivian Twitterati versus Indian Twitterati, the real question is, why did members of the Maldivian government decide to get involved in all of this? Because Indian Twitterati are not the Indian government. Government involvement is a completely different ballgame, and this is the first big question: why did they get involved? The second question is, once they did get involved, what is the kind of language that government officials are using? Referring to India as cow dung mixed with laddus and God knows what not. Very uncivilized language for a deputy minister to be using. And the problem is that even though this deputy minister in question has deleted her tweets, no action has been taken against her. And just 1 hour back, she was tweeting some rabid anti-Indian Pakistani who's abusing India all the other time in his timeline. So the question is, what exactly is the government up to? Because if President Muizzu isn't acting against such indiscipline,
ultimately, the buck stops with him. The third issue is, the appalling lack of knowledge that seems to be displayed by the Maldivian tourism industry. Because you see, what's been happening is that they've been tweeting that the average Western traveler spends $2,500, whereas the average Indian traveler only spends $750. That is true, but that entire $750 goes into the Maldivian economy because the price bracket at which Indian travelers go to the Maldives is entirely localized. Whereas all those Western companies, they make all their profits skimming off, and these are huge profit margins. There is no way a suite in the Maldives costs $15,000 a night. Out of that, maximum, say, $200-300 are going into the Maldivian economy, and the remaining $14,500 would be going into the pockets of these Western multinational corporations that run hotels out there. Second, the minister and both the ministers in question, despite being Maldivians, didn't even seem to know the difference between scuba diving and snorkeling and the gear required. So there's really appalling lack of knowledge of the tourism industry and of tourism itself and of diving itself. Now, it's like saying, how can somebody in the Maldives not know the difference between scuba diving and snorkeling? In India, it's still fine. But in the Maldives, really? And how are these people even ministers? Fourth, the question is, why has the Indian High Commission even taken this up? This should have been dealt with proactively by President Muizu himself. There's no point coming out and saying, I'm against all foreign militaries in Maldives, and we won't allow the Indians, but we won't allow the Chinese or the Pakistanis or everyone else either. When your ministers are actively targeting India, in response, mind you, not to Indian government officials, but in response to tweets and Twitterati. Debate, several celebrities and others were tweet on this matter also. As a senior most diplomat and former ambassador, how would you look at the whole matter? Well, I think it is unfortunate because the new president of Maldives has been on an obsessive campaign against India almost even before he was elected. He kept talking about expelling the military personnel which were there to service the aircraft and to look after Maldives cooperation program, which is extensive in many ways, not just in terms of servicing the aircraft, but also in terms of grants in aid. We've built hospitals there, we've built training facilities there for young boys and girls, and also part of the airport of Malé. So India's grant in aid means that it is without any strings attached. Somehow the new president has taken it as his mission to talk against India and to act against India almost from the word go, from the day he was installed. He kept on repeating what he had said before the elections. So this is strange because he is not reflective of the position of a large number of people of Maldives, because the other political parties believe and have acted in good faith in increasing and enhancing cooperation with India. So the is instrumental for Maldives security and prosperity. Dr. Mohammed Mizuzu government must distance itself from these comments and give clear assurance to India do not reflect the government policy. Well, exactly as I was saying, that people of Maldives, a large number of them, believe in friendship and cooperation with India because it has helped the prosperity of Maldives. And as the former president has very rightly said, the government of Maldives, led by the president, should distance itself. But not just distance itself in words, but also in deeds. Because if the present president of Maldives, looks at the record of cooperation, then he'll find that Maldives owes 20% of its foreign debt to China, about $1.2 billion. Whereas Indian tourism alone gives Maldives $1 billion every year. So where is the comparison?
I'm just talking about what Indian tourists spend in Maldives. What about the number of projects that India undertakes almost every year in Maldives? So India's cooperation with Maldives is without strings, whereas Chinese cooperation has strings attached because Maldives is under debt to China of $1.2 billion, which means 20% of its foreign debt. Sir, these opinions are personal and do not represent the views of the government of Maldives. Moreover, the relevant authorities of the government will not hesitate to take action against those who make such derogatory remarks. So, is the president of Maldives prepared to dismiss this particular minister? If he does dismiss that minister, that means that he was not aware of the sentiments expressed by that minister. Otherwise, the implication would be that it was with a nod and wink by the president himself. So the matter is serious because you cannot shoot an arrow and then say that no, sorry, we made a mistake, we are going to withdraw the arrow. The arrow is gone. It has done the purpose for which it was shot. Sir, one important, is this going to affect the international relationship between India and Maldives also? Well, I think we should make two distinctions. Number one, the previous governments were cooperative with India. The previous president has immediately made a statement condemning this kind of a remark. The second, as I've said repeatedly, the people of Maldives realize that their prosperity depends a lot on India's grant in aids and India's tourism income, which amounts to $1 billion every year. It's not just the tourists going there, but also the Indian private companies which has set up tourism facilities, starting from Tata's to other major Indian companies, have set up resorts there, hotels there. So there's a lot at stake for Maldives in terms of not letting the relations sink any further. Sir, my last question. Well, Sheikh Hasina has been a friend of India, and India has been a friend of Sheikh Hasina and Bangladesh from the time it was set up in 1971. It is unfortunate that Sheikh Hasina's family, including her esteemed father, was shot down in that horrible incident by Bangladesh's some elements of Bangladesh's army. Sheikh Hasina has been consistent in her approach that cooperation results in prosperity. Prosperity for Bangladesh, prosperity for India. So her remarks are welcome, and I am sure that in the next term of Sheikh Hasina, we will see further areas where Bangladesh and India prosper together. को लेकर एक नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, कुछ कमेंट्स भी मालदीव्स को लेकर सर एक नया विवाद छिड़ता नजर आ रहा है. किस तरह से देखते हैं आप? सीनियर एम्बेसडर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं. मालदीव्स के राष्ट्रपति उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है जो शुरू हुआ था उनके इलेक्शन से पहले, और उनके अनुसार कि जितना वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे शायद उतना ही उनकी पॉपुलैरिटी मालदीव्स में बढ़ेगी. पर वक्त बताएगा कि क्या उनका ये अनुमान ठीक था या वो मालदीव्स को एक ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हैं जिसमें मालदीव्स का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नुकसान बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक सोसाइटी में वो डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं. मालदीव्स के ज़्यादा लोग जो हैं वो इस दिशा में जाने के रुख में नहीं हैं. वो रियलाइज़ करते हैं कि भारत जो है उनका हमेशा हितैषी रहा है, उनका हमेशा दोस्त रहा है, उनका हमेशा सहायता देने वाला मुल्क रहा है, सबसे बड़ी सहायता देने वाला मुल्क रहा है. सो मालदीव्स के लोग जो हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में नाखुश हैं, और यही बात है जो उनके अपोजिशन के लीडर्स जो हैं बार बार दोहरा रहे हैं. बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप एक घनिष्ठ मित्र देश के बारे में इस तरह के बयान तो वैसे भी शोभा नहीं देते, पर एक मंत्री की हैसियत में अगर बयान दिया है
तो उसका मतलब साफ यही है कि शायद प्रेसिडेंट ने खुद उनको इशारा किया होगा कि ऐसे बयान दीजिए। सो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका कहना बिल्कुल वाजिब है, सही है कि भाई अगर आपने नहीं ऐसा इशारा किया तो या तो अपने मंत्री को आप डांटिए, कुछ ऐसा एक्शन लीजिए जिससे संकेत जाए भारत को और विश्व को भी कि हमारा इंडिया से ताल्लुक़ जो है वो पहले की तरह रखना चाहते हैं। अगर नहीं ऐसा कोई संदेश गया तो इसका मतलब ये है कि जो करंट राष्ट्रपति हैं वो जैसा उनका पहला रुख था इलेक्शन से पहले वैसा ही चलता रहेगा। सर, इसी कड़ी में एक लीडर्स हो या फिर हाई रैंकिंग इंडिविजुअल हो, उनसे मालदीव का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, वो सब निजी हैं। मालदीव ऐसे बयान देने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी मालदीव सरकार। देखिए, कोई जब आदमी एक ऑफिशियल पोजीशन में होता है और स्पेशली अगर कोई मिनिस्टर है तो जो वो बयान देता है वो एक प्रथा चली आ रही है कि वो पूरी कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब पूरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रेसिडेंट का ये कहना या सरकार का ये कहना कि वो निजी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये बयान दे रहे थे, ये तो गलत है। कोई मिनिस्टर पर्सनल कैपेसिटी में प्रेस को बयान नहीं देता है और सोशल मीडिया में लिखता नहीं है, वो है ऑफिशियल कैपेसिटी। एक बार आप शपथ ले लें किसी मिनिस्टेरियल पोस्ट की तो आपका कोई पर्सनल रूप नहीं रह जाता, और स्पेशली जब आप सोशल मीडिया में एक ऐसा कड़ा और भद्दा बयान देते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट मालदीव्स के सच में वो उसके ऊपर नाराज़ हैं तो उसको डिसमिस क्यों नहीं कर देते? असर तो पड़ चुका है, क्योंकि देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक साल पहले तक मालदीव्स और इंडिया में जो रिलेशन थे, जो रिश्ते थे, वो बहुत मजबूत थे और इंडिया हर तरह की मदद कर रहा था। आपको 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो उनकी डेवलपमेंट हुई है उसमें इंडियन कंपनीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। जो रिज़ॉर्ट्स इतने बढ़िया बने हैं, टाटा और बाकी कंपनीज़ ने वहाँ जाके अपना पैसा लगाया और अपनी मेहनत लगाई है। इंडिया ने उनके एड प्रोजेक्ट के अंदर हर स्फीयर में, हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ योगदान दिया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे ट्रेनिंग फैसिलिटी हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो, सब में इंडिया का एक प्रिंट लगा हुआ है। दूसरा, इंडियन टूरिस्ट हर साल इतनी तादाद में जाते हैं कि $1 बिलियन वो खर्च करते हैं मालदीव्स के होटल फैसिलिटीज़ वगैरह में। इन कंपैरिजन चाइना जो है वो उनको ऋण के अंदर फंसा रहा है। $1.2 बिलियन का ऋण मालदीव्स ने चाइना को देना है, जो उसका 20% है बाहरी ऋणों के हिसाब से। सो कंपैरिजन आप करिए, एक तरफ से चाइना उनको बार बार नकेल दे रहा है कि आपने $1.2 बिलियन हमको देने हैं, दूसरी तरफ से भारत कहते हैं हम तो $1 बिलियन टूरिज़्म हमारे जो यात्री हैं वो हर साल स्पेंड करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि हम रिलेशंस बढ़ाना चाहते हैं। तो असर तब पड़ेगा अगर मालदीव्स की नीयत ऐसी ही रही, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे रहे और उनके एक्शंस ऐसे रहे। सर, आखिरी सवाल आप सीनियर डिप्लोमेट के नाते शेख हसीना बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हैं कि जिसका रिश्ता इंडिया से बहुत करीबी था। उनके पिताजी ने वर्चुअली बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाई और 71 के बाद वो प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने बांग्लादेश के। और अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स जो आर्मी के थे उन्होंने पूरी फैमिली को, सिवाय शेख हसीना जो उस टाइम बाहर थी देश से, सबको मार डाला। तो शेख हसीना को वो सब याद है और शेख हसीना को ये भी अच्छी तरह से पता है कि दोनों देशों की जो तरक्की है वो एक दूसरे के साथ मित्रता के ऊपर आधारित है। तो
उनका ये बयान इलेक्शन डे में बहुत महत्वपूर्ण है और एक संदेश है कि हमारी मित्रता बढ़ेगी और भी मजबूत होगी।